Alright everyone, good morning and welcome back to the channel. Today is Sunday and Sunday means one more ride. And today I am actually riding with a larger group. I think there are around 9 different bikes. Mixture of Royal Enfield, Yamahas, KTM and of course my BMW. It's gonna be a fun ride, that's for sure. मैं काफ़ी टाइम के बाद एक गोवन क्लासिक देख रहा हूँ. सो वन ऑफ द पर्सन हु हैज़ जॉइंड अस, उसके पास क्लासिक 350 गोवन क्लासिक है. अ ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक. वेल मैन, आई एम नॉट वेरी श्योर व्हाई वी आर राइडिंग स्लो, बट वी आर. I guess everyone is trying to warm up. Alright, so about the ride. Today we are going to a place not very near to Bangalore, but around 120 kilometers from here. It's called Hogenekel Falls. It will take around 3 hours from Whitefield, 3.5 hours. I think we're going to stop in between as well for breakfast, so maybe a bit longer. And this is actually going to be my first long ride. Matlab, not very long ride, but at least 120-130 kilometers in a stretch. I think the last time I did that was Black Buck, and that was also not 120, it was around 90. So longest ride for me. And I think people have warmed up. I can see some bikes crossing me by. Very nice, very nice. Go along, go along. Oh man, एक तो ये कचड़ा रोड में ना मज़ा नहीं आता है एकदम. The roads are not going to be nice this time. We're going to see a lot of traffic, a lot of potholes, muddy roads, different kind of adventure. And that's the reason why it's taking around 3 hours for 120 kilometers. Because the route itself is not that great. I see a lot of villages as well. Oh man. Varthur Junction मुझे लगा था ठीक हो रहा है शायद, but seems not. Still has its own problems. Here we are. I think ये अपना group है. What are we doing? Are we waiting for someone or how is it? I think we are waiting for a few other folks. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and I think 8th and 9. I think there are 9 different bikes. So total 9 different bikes and 10 people. We are being led by a classic 350, so that's good. So okay, let's talk about the way. So हम Whitefield से जाएंगे to first Attibele, and then from Attibele we have to go to Anchetti, and then from Anchetti it's direct Hogenekel. So that's the way. But यार roads तो बहुत ही गंदे हैं भाई. मतलब I don't know इसमें क्या हो गया है roads को. Oh man, ये city roads हैं. My God. So horrible condition of roads. मतलब roads तो मैं बोलूँगा ही नहीं, roads है ही नहीं. अरे यार हमारी bullshit government, what to say. Oh, Govan Classic crossing me by. बढ़िया. Beautiful stuff. Shitty roads. I don't think इसमें वीडियो बनाने का कुछ पॉइंट बनता भी है. So I'm gonna stop recording. I think हमारा first halt is in Attibele. We are going to have breakfast there, and उसके बाद hopefully the roads get better and I get to show you some good views. Alright, so I'll stop recording and then see you back in a while.
ऑलराइट, सर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस। ब्रेकफास्ट हो चुका है। अतिबेले से अब निकल रहे हैं टुवर्ड्स एंचेटी एंड देन होगेनिकल। एक दो बंदे और ज्वाइन किए हैं हमारे साथ। यहाँ से इट सीम्स रोड्स आर गुड, एटलीस्ट दैट्स व्हाट माय फ्रेंड वाज सेइंग, बट लेट्स सी, होपफुली दैट्स द केस। नहीं तो अभी तक का जिस तरह का रास्ता मिला है वो तो बहुत ही ख़राब है। ऑलराइट, सो द ट्रैफिक हैज़ नॉट रिड्यूस्ड। रोड थोड़े बहुत सही हो गए हैं बट ट्रैफिक स्टिल सीम्स टू बी लाइक दैट। एंड होपफुली द वेदर क्लियर्स अप। थोड़ा सनलाइट वगैरह आएगा तो फिर अच्छी वीडियो आएगी, अदरवाइज़ तो ऐसे ही कुछ बन जाएगा एज़ यूजुअल। इट्स क्वाइट कोल्ड हियर। इट्स व्हाट अराउंड 8:30, 8:20, so we should reach by 10:30 if we do not stop. I think अभी हम और कहीं हॉल्ट नहीं करेंगे, but you never know. अगर फिर से भूख भाग लग गई तो then we may decide to stop. But yeah, this is fun यार. Oh, okay. ऑलराइट, हमें यहाँ से राइट लेना है। दिस इज़ अतिबेले रायकोटाई समथिंग। नॉट वेरी गुड इन प्रोनाउंसिंग नेम्स, बट 84 kilometers from here. We were riding in sequence, but I guess there is one guy थोड़ा सा वो स्लो है, so इसलिए I'm gonna cut everyone and go front. मेरे सेना वाले जो दोस्त हैं वो सब तो आगे ही हैं anyway. And ये SMK का pin lock is useless to be honest. I don't think it's working. I can still see a lot of that vapor kind of thing on my visor. Not working out that well. Taking a right. Wow. Beautiful scenes. I think अब थोड़ा धीरे धीरे राइड ठीक होना स्टार्ट होगा, but still there are just too many trucks and buses, so the way to Hogenickel is not that great. At least initial assessment तो यही है, but then there is still like 80 kilometers to go, so hopefully the road improves. Okay, I can't seem to find my Sena friends. हम बिछड़ गए हैं। होपफुली मिल जाए कहीं, लेट्स सी। ओह ब्यूटीफुल, गुड स्टफ बड़ी, गुड स्टफ। Oh, what scenes, man. I think this seems to be a chicken lane. Wow, beautiful looking chickens. हाँ, भूख लग गई भाई, भूख लग गई। Which area is this यार? कहाँ आ गए? I mean the way to Hogenickel is horrible. वे तो इसका बहुत ही ख़राब है। बाकी हो सकता है Hogenickel बहुत अच्छा हो, बट द वे टू इट
So I think we are crossing a small town. I don't know which town is this, but कोई छोटा सा टाउन ही है जिसको क्रॉस कर रहे हैं हम. That's why narrow roads, traffic, speed bumps, all sorts of things. Okay, but where are we and how many kilometers left? So only 60 kilometers left now. कमाल की बात यह है कि हमने ऑलरेडी 60 किलोमीटर्स राइड कर लिया है. बिकॉज इट्स वॉज अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम माई होम. सो 60 किलोमीटर्स राइड कर लिया है एंड मुझे तो पता ही नहीं चला. बट वेयर इज़ दैट अब्रीला का यार? एक बंदा था हमारे साथ, वो तो पूरा गुम ही हो गया कहीं.